हो गया? Started. या तो हम प्योरली टेक्निकल स्किल पे फोकस करेंगे. ओके, तो आशा आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की और हमने एक बेसिक डिटेल आपकी ले ली है. सो लेट आई लाइक टू डिस्कस इन डिटेल के वाई रिटायरमेंट प्लानिंग. क्योंकि जब मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया तो आपने बताया था यस यू आर planning, you are interested in for the retirement goal. Okay, so I like to discuss why, yeah, what is the need of retirement planning. So I am sure that you must be aware the one concept of inflation. तो मुझे थोड़ा बताएंगे क्या आपको आइडिया है कि इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई बढ़ती रहती है. ओके, महंगाई बढ़ती रहती है. तो एग्जांपल में एक सिंपल एग्जांपल लूँ कि आज अमूल का मिल्क जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज़ पर लीटर मिलता है. इफ़ यू कैन इमेजिन एंड गो 10 years बैक, तो उस समय कितना पर लीटर था? Before 10 years it was 20 rupees. 20 रुपीज़ पर लीटर. Yes. तो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज जो है हमारे कंट्री में जो एसेंशियल प्रोडक्ट रहते हैं उसका इन्फ्लेशन एवरेज 7% पर एनम से बढ़ रहा है. एज आई कम टू नो कि यू आर मदर ऑफ 2 यंग चाइल्ड एंड योर डॉटर इज इन सेकंड स्टैंडर्ड ना, यू सेड थर्ड स्टैंडर्ड. ओके, तो अभी उसका कितना अप्रोक्सीमेटली डॉटर के पीछे एनुअल एक्सपेंस आ रहा है? उसके एजुकेशन या उसके अपब्रिंगिंग का एक साल का अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है? मिनिमम 1 लाख. तो आप सोचिए कि एग्जांपल 20 साल पहले या 30 साल पहले एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 25 years बिफोर, तो उस समय आपका कितना खर्चा था? So it was very less. It was hardly 5,000 in a year. 5,000 in a year. So you can understand कि in 25 years down the line आपका 1,05,000 रुपये का खर्चा जो है ऑलमोस्ट 20 times हो गया. If I just convert into the education inflation, okay, so which is the 25. So which will translate into approximately inflation of 12%, 12.73 यानी कि almost 13% बढ़ रहा है. तो हम तो अभी क्या है रिटायरमेंट की बात करें, क्योंकि चिल्ड्रन हायर एजुकेशन का गोल का जब प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है उसका डबल डिजिट में इन्फ्लेशन देना पड़ेगा. सो दैट इज द वन इम्पोर्टेंट रीज़न कि आज एग्जांपल मैं बात करूं कि आज आपको रिटायर होना है, आप और आपके हस्बैंड को. ओके, वी अज्यूम दैट कि आपके बच्चों का एजुकेशन खत्म हो गया है, उनका शादी हो गई है, आपके पास खुद का मकान है, तो मिनिमम लाइफस्टाइल जीनी है आज, तो कितना मंथली एक्सपेंस होगा आपको? Sir, for minimum lifestyle we will need 50,000. 50,000 ना. Yes. तो कहने का मतलब है कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास उस समय 25 साल पहले 10,000 की इनकम थी एंड वी वेर एबल टू सेव, वी एक अच्छी तरह से लाइफस्टाइल जीते थे और फिर भी सेविंग भी होती है, और आज 50,000 भी कम हो रहा है लोगों को. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट 25 years में करीबन जो है 7% इन्फ्लेशन की वजह से 10,000 रुपये का परचेज पावर के लिए आज मुझे कितना चाहिए है? 50,000 रुपीज़ चाहिए है. सो दैट इज द रीज़न के वी हैव टू फर्स्ट प्लान फॉर दी रिटायरमेंट प्लान. ओके, तो इसका मतलब आज हम बात करें तो आपकी एज 34 है, हस्बैंड की एज आपने बताई 35 है. मैं नो एट व्हाट एज यू आर लाइक टू रिटायर? At 60. 60. Yes. ओके, तो इसका मतलब मैं आज बात करूँ और एवरेज 7% इन्फ्लेशन पकड़ के चलता हूँ और 50,000 का हमारा मंथली एक्सपेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली हमें 2 लाख रुपया चाहिए होगा. इफ़ आई जस्ट कैलकुलेट 26 year 7% इन्फ्लेशन, 50,000 का एक्सपेंस है, तो मुझे उस समय के लिए 2,90,000, क्योंकि 26 year आ गया है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 2,90,000 रुपीज़ का मुझे फर्स्ट मंथ का विड्रॉल चाहिए होगा. First month का दिस इज द फर्स्ट मंथ एवरी मंथ इन फ्रॉम 60 year From ओनली. 60 years only. ओके, तो इसका मतलब ये है कि दैट्स वन ऑफ द रीजन वन नीड टू प्लान फॉर द रिटायरमेंट, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली. दूसरा एक रीज़न है जिसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, उसको कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अभी आपको पता ही होगा कि थैंक्स टू द मेडिकल एडवांसमेंट जो अपर मिडिल क्लास फैमिली रहती है उनकी जो जीते हैं वो लंबा जीते हैं, दे लिव मोर. आपके केस में देखेंगे तो आप मुझे बता रही थी
मीटिंग में कि आपके फादर है, आपके इन-लॉज है, तो अभी समझो कि मैं 4-5 grandfather is also there. ग्रैंडफादर व्हाट एज है? Sir, he completed 75 complete हो चुके हैं उनके. ओके, किससे? आपके ग्रैंडफादर? मेरे grandfather. तो आपके फादर की एज क्या है? He is 55. 50 Okay. नहीं 55, ओके, 56. बिकॉज़ पहले यंग एज में शादी young होती age में थी। शादी होती थी, ओके, right. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ऑन एवरेज आप देख रहे हैं कि 75-80 व्यक्ति आज की डेट में हेल्दी है। So those who Yes, are he is healthy. yes, so those who are in age of 80 today they are likely 60, they are likely to live till age of 80. 80. But those who are young like below 30 or above below 40 they may like to live maybe up to 90. 90, right. ओके, तो मैं जान सकता हूँ कि व्हाट लाइफ एक्सपेक्टेंसी यू शुड प्लान फॉर योरसेल्फ? Sir, 90 is fine. 90 is fine. Yes. So if I consider 90, okay, so almost we have a 31 years period for post retirement period. Post-retirement. Okay. Now third reason हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज हमें मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं है। हमने जो 50,000 रुपया रखा है उसमें तो हमने बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रखा है, बट आज हमें कोई मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं है। बट चांसेस है कि higher chances कि when we reach 60 plus then our health may not be good like today. We may end up with some kind of lifestyle disease. We may have some kind of catastrophic illness, so we require some recurring fund for medical expenses also. So that's the reason we need to plan for the retirement. Fourth is that you have shared me that your husband is working, Sagar ji na, he is working into MNC company. Okay, definitely उनको एक आज अच्छी सैलरी है, but there is no pension ना, if I'm right. Very true. Okay, We तो do इसका that. मतलब क्या है कि even though there is a today हम कह सकते हैं कि presence में your husband, okay, Sagar ji is earning a good income, but there is no pension is there. No pension, right. Okay, so that is the biggest problem with the upper middle class people, because when they have born and brought up, initial period family has taken care, okay, till age of 20-25. Once they have completed education, started with the good salary based on their education, and they are earning good income. But when they come to retirement, forced retirement, especially for salaried employee only, okay, तो उस समय उनका एकदम से क्या होगा, इनकम जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे they will find very difficult, because उस समय हमारे पास इनकम नहीं है and we have a minimum expense and you need, as I said, कि almost 3 lakh rupees per month for next example 31 years के लिए। 31 years. So that is one of the reason कि when you don't have any pension job, or if you are not having any guaranteed pension kind of job, those who are even working in central government, they do not get pension today because of that, which cost government very high. Very high. Okay. Fifth could be reason कि there is no loan available for retirement goal, because we can take loan Any for loan. most of the goal, even for children higher education, children's marriage, maybe for buying a car, household, but we may not get, we must not get। आज की डेट में सीनियर सिटीजन को क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं कंपनी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सो माय इंटेंशन इज टू डिस्कस कि दिस आर दी वेरियस रीजन कि रिटायरमेंट गोल इज लॉन्ग टर्म गोल एंड इट इज द मोस्ट इग्नोर्ड गोल बाय दी मोस्ट ऑफ दी फैमिली मेंबर, बिकॉज के ये 25 साल के बाद है, 20 साल के बाद है। बट इफ वी डोंट डू टुडे एंड एवरी मंथ प्लानिंग फॉर टू अचीव दिस गोल, देन वी फाइंड वन डे कि हमारे पास रिटायरमेंट आ गया एंड वी डोंट हैव एडिक्वेट फंड एंड वी मे हैव टू आइदर वर्क पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओके, और आइदर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज अवर लाइफस्टाइल, बिकॉज एट एज ऑफ 60 डेफिनेटली आपके हस्बैंड कितने भी अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल है और वो जब रिटायर होते हैं तो डेफिनेटली जब सेकंड जॉब के लिए जाएंगे तो उस समय उसका 50 लाख का भी सैलरी है एनुअल। नो, नेक्स्ट कंपनी विल नॉट गिव यू 50 लाख ना, दिस इज नाउ यू आर 60 प्लस, ओके, सो वी लाइक टू गिव यू एज अ कंसल्टेंट, वी गिव यू सम starting salary of 20 lakh or maybe 25 lakh highest example. So your immediate earning cap potential is reduced by 50-60%. So that is the biggest problem कि we may not get the adequate job and we may have to compromise our lifestyle after the retirement. So if I go into one by one detail and put it everything on a timeline, परफेक्ट आ रहा है ना? सो इफ आई पुट इट ऑन टाइमलाइन, ये भी दिख रहा है हम जो कर रहे हैं,
Okay, so today you are 34, your husband is 35, retirement age is 60. At the time, husband will be 61. Okay, let's say I am keeping you as head of the family, and 90, so 31 years is the retirement period. Now we have considered average inflation of 7%. Okay, for pre and post retirement monthly household expenses 50,000. Okay, so now if I say what is the first month amount is required, which we have calculated 2,90,000. Okay, now second is we need to understand what return we will get after retirement. Definitely after retirement we may not be able to aim for the higher return, because we have to withdraw every month fixed income starting from 2,90,000, and again we have to increase our income every year by 7%. Then we'll be able to withdraw any point of time 50,000. Suppose if I explain you, okay, second year you have to withdraw 2,90,000 into 1.07, so it is a 3,10,300. So when every year you withdraw compounded 7%, anytime if you see today, purchase power will be only 50,000. So suppose if I consider average return of 8%, I'll discuss in detail how this 8% is arrived, or how we can take lower than 8% or more than 8%. Okay, but let me take with the 8%. So my 7% will go from the inflation. So I have just return of 1% only. So my real rate of return is known as a after inflation only 1%, and I have to live for under 30 years. Okay, so what will be my corpus is required. So if I start with the 2,95,000, 30 into 12, so I need almost 9 crore 11 lakh 33,400 rupees corpus. So have you ever thought of this much of big amount you require? No, sir, never. Okay, so I thought एक आध 1 करोड़ भी हो जाएगा कैपिटल. डेफिनेटली नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली में एक्सप्रेशन होती है कि मैं करोड़पति बन गया, मेरा काम हो गया. बट जब वो करोड़पति बनेगा तब पता चलेगा कि वो करोड़ रुपए की वैल्यू 10 लाख ही है. यानी कि उसका परचेस पावर क्या होगा, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद वो 1 करोड़ का 10 लाख या 20 लाख ही हो जाएगा. तो उस समय अपने को वी नीड अ बिग अमाउंट टू एंश्योर दैट कि वी एबल टू विड्रॉ 2,90,000 per month, and our withdrawal will increase 7% every year. So till 90 you do not to worry, and when there is a life expectancy is over, then your future corpus is also zero. So that's how you require this much of corpus. Now if I move ahead and I say that ki I don't know about your risk profile, but let me just give you idea how we can decide the risk profile based on some discussion. Suppose you are conservative investor, you expect let's say 7%. If you are a moderate investor, you are expecting let's say 9% return. If you are let's say calculative investor, calculative risk, let's say we expect this is moderate and this is the conservative. So what is the per month investment is required? So we have 26 year with us. First scenario 7%, and I would have to achieve a 9 crore 11. So I need a SIP of 1,06,000, approximately 600 per month. If I go to a 9% expected return, my expected return in accumulation period, okay, from this period example, so I need a SIP of 77,642, and third is the, if I go to the third scenario, I require 56,000 per month SIP. Now you must be wondered कि from 1,06,000 to it is almost half when you move from 7 to 11%. So where you may want to, you would like to know कि हम वहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट करते होंगे. तो यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं 7% में, तो प्रीडोमिनेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. पैसा हम कहाँ पे दे दिया, गवर्नमेंट को. ओके, तो जिसको हम बात कह सकते हैं PPF है, आपके पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स है, बैंक FDs है, कि जहाँ पर रिस्क क्या है, मिनिमम है. पैसा किसको जाता है ऑन एवरेज, गवर्नमेंट को या PSU को जाता है. लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है. तो मैंने एक बास्केट
परचेज किया वो बास्केट मुझे कितना अर्न करेगा, मेरा कैपिटल पे 7%. 7%. बट व्हेन आई सी दैट इफ आई इन्वेस्ट इन दिस बास्केट आई नीड almost 1,06,600 per month, which is definitely for any middle class person completely Very high. unaffordable. So what could be the way out? So if I take a moderate risk and if I invest my investment 50% in a private or you can say listed companies, instead of word private, let me use word listed companies. Those I'm sure that you must be investing in equity or mutual fund. आप कभी कर रही है कि नहीं करती है? Yes, I do. ओके, तो कौन कौन सी कंपनी आपने इन्वेस्ट किया है शेयर इक्विटी मार्केट में? Mutual fund I have Birla. ओके, Then I have HDFC with me. Reliance is also there. Franklin is तो there. कौन से बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है? क्या अभी आपकी थॉट प्रोसेस थी इन्वेस्टमेंट करने की? It was everyone was telling कि market में mutual fund is very good. So I just invested. परफेक्ट. तो यहाँ पे हम वही कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कंपनी नहीं परचेस करते बट प्रोफेशनल मैनेजर से हेल्प से करते हैं. वो प्रोफेशनल मैनेजर को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं. I'll discuss in second meeting in detail when we have to execute the product. But right now let's keep simple discussion because core is our planning. So when you invest 50% to listed company through mutual fund, this is called as a equity investment, and 50% example into GSEC. Okay, या private company corporate debt instrument, fixed income instrument. So you get approximate return of 9% because you are approximately here earning 11%. Here you are earning 7%. It will translate into approximately 9%. And if you take a more calculative risk, okay, so you may expect that I'll go predominantly 80 to 90% my initial year because we have a long period with us. Right. We have a long period of 26 years with years. us. So if we are not worried about the much volatility and if we invest into calculative risk instrument, okay, and if we invest out of 26 years, let's say 22 years in predominantly into equity instrument and last 4 years we'll switch to the GSEC instrument or fixed income instrument. So by doing this kind of strategy we can expect the average return of 11% on our investment. So now which kind of the thought process, if I say okay, for retirement planning for accumulation purpose which we have discussed, which will be the better for you, whether to invest into first scenario, second scenario or third scenario? Definitely third scenario. Okay, third scenario is the suitable to you. So you are planning to go for the 56,000 per month SIP. Suppose if you have to start today SIP for your retirement planning, so how much budget you can do it? So at present I don't have 56,000, but I can start with 10,000. Okay, you can start with the 10,000. Okay, so let me give you one more help to you because as we have considered this 56,000 fixed to achieve the 9 crore 11 lakh rupees. So we can have another innovative option where we will increase our investment per annum in fixed percentage. So may I know कि suppose for your retirement is one of the important goal and we have to achieve the 9.11 crore investment, 9.11 crore investment. So suppose if you have to increase your investment from 10,000 to example on average in percentage term 10%, 15%, 20%, how much you would like to increase? Because आपकी और आपके हस्बैंड की इनकम भी बढ़ेगी as well as जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे जाके कि इनकम बढ़ती है साथ साथ में आप अपने खर्चे भी कम कर सकती है. ओके, आई हेल्प यू कि हम अपनी अनप्रोडक्टिव एसेट्स जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको भी हम सेल कर सकते हैं. तो दैट विल डू इट ओवर अ पीरियड टाइम. तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा मैं ग्रोथ रेट पकड़ूं जो मेरी एसआईपी हर साल बढ़ती जाएगी? 20% ग्रोथ रेट में पकड़ूं. ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि हमारा रिटर्न 11% है और हमारी एसआईपी को हम 20% हर साल बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो इफ आई डू वन सिंपल कैलकुलेशन विच आई मे नॉट एबल टू एक्सप्लेन, there is one standard formula is there. So based on formula I'll come to the outcome. If I start with the X SIP and if I increase my X SIP by 20% per annum, what will be the my
future value to achieve the 9 crore 11 lakh. So if I start with the 100 rupees investment, okay, and if I have a 11% return for 26 year and return is 20% for 26, growth is 20% for 26 year, so what will be the my answer? Just give me 2 minute time to Yes. go through it. So if you start with the 100 rupees investment, this 100 rupees investment will translate into 1,10,440. Okay. So now this is a 100 rupees investment end of the every year, but we are going to do investment every month. Okay. So first we have to, what is for 9 crore 11 lakh? What is exact 9 crore 11 lakh 33,400 divide answer into 100. So I need investment SIP of annual investment of 82,519 and I divide into 12 part because I am going to invest every month, na? So if I divide into 12 part, you will surprise to know that you need to do SIP of only 6,500. So if you start with the 6,500 example, okay, and if you increase growth rate of 20% per annum, you will be able to achieve the corpus of 9 crore 11 lakh. But as you have already given me budget of how much? 10,000, na? You have given me budget of 10,000. Okay, so let me see ki for 10,000 rupees what could be the growth rate I can consider. Okay. Perfect. Any questions? Yes. Okay. So let me use the concept of 10,000 rupees because I am having a 10,000. Okay. I'll keep 15% growth. Let me just do a recalculation because 20% growth we need not to go for it. So if I say 1 plus 1 0 raised to 11 minus 1.115 raised to 26 from 0.11 minus 0.15. Become 156,942. Okay, so now I need 9 crore 11 lakh. 33,400 divide answer, okay, into 100. So I get 1,60,045. Okay, if I put it this for 11%, yes, so if you stretch to a 12,600 per month, okay, then your growth rate required is only 15%. Okay, so what we'll do, we'll start with the 10,000 and start with the 15% growth rate, and then every year when we go for the review, we can check it what exactly we can plan for it. Okay. Yes. Now, so this is how we have come. Now let's say ki here post retirement, if I go into some advanced scenario, because what happened that in post retirement, if you assume that we have taken a return of only 8%, na? What is the return we have taken? 8%. Post retirement period. Pre-retirement period we have taken a return of 11%. Average return is our 11% in the strategy which generate the predominantly equity in initial year and later into switching to the debt. Okay. So now if we want to reduce this 12,600 to example 10,000, we have option, but for that we need to take a little risk. Okay, I am giving you just basic idea ki if I have a example return of 9%
in post retirement period, how I can generate, because I need to withdraw. I have how many years? 30 years in place, na? 30 I'm years going to after leave. retirement. Example, it is understood that you have 60. 60. So let's say you assume that you are withdrawing from the debt fund only. Okay, you are withdrawing from the debt fund only. But what you have this fund right now, because what happened that here we are keeping all fund in 8%, but now we are one more conservative. We will do withdraw from the 7% instrument only, which is a liquid fund example, or short-term debt fund, which is a more secured. But whatever the fund we require after 10 years, we will keep into, let's say, average 10% instrument. And which is the fund which require after 20 years will keep into 12% instrument. So by doing this thing, okay, our expected rate of return will come to 9%, and our corpus will come to a example from 9 crore to, I am not going to calculation right now to save time, it becomes a example 8 crore only. Okay. So you have saved 8 crore. Now if I have to achieve 8 crore target, so I can start with the 10,000 SIP. So by starting at 10,000 SIP, okay, right now, and this SIP will increase 15% every year. Okay, our objective is to create a corpus of 8 crore. Now 8 crore will divide into 3 parts. Initial, let's say 3 crore will be used in this fund, okay, and it will generate the 7% return, and you will be able to withdraw 2,90,000 rupees per month for next 10 years. Then if I go into the balance, I have a 5 crore. Let's say another fund is used to 3 crore right now. Okay, for the I park into 10% instrument, and suppose after 10 years I need example 6 crore to take the next 10 year withdrawal. So I'll be able to do. I have a 2 crore right now. I have parked for 12% return. I know that 20 years is a longer period. So I can generate the, let's say, 8 crore rupees, and that will take care my next 10 years. So if you are agree, okay, then we can pursue this kind of strategy. So we can start with the 10,000 rupees, and instead of 9 crore 11, we need to generate the only corpus of 8 crore. 8 crores. And we will be able to start with the 10,000 monthly SIP, and we will increase, when we increase 15% per annum, we will be able to achieve the 8 crore, and out of 8 crore, we will divide into bucket strategy, and we will be able to withdraw. Definitely here we are discussing everything in planning. Definitely I will be with you, okay, and review everything every 1 year. So कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आज हमने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद सब कुछ स्टैटिक बन जाने वाला है. मैं आपके साथ रहूँगा, हर एक चीज़ डायनेमिक है, तो हर साल उसको क्या करने वाले, रिव्यू करने वाले. तो फर्स्ट मीटिंग में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और 10,000 जो है उसका हम एक SIP स्टार्ट करना है. ओके, तो अभी जो आपने इन्वेस्टमेंट जो अभी किया है, जो आप बता रही थी कि आपने रिलायंस में किया है, या दूसरा कौन कौन सी कंपनी बताई थी म्यूचुअल फंड में? रिलायंस, ओके, HDFC, देन फ्रैंकलिन. तो प्रेडोमिनेटली किस टाइप के फंड में किया है? क्योंकि यू मस्ट बी अवेयर के लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप होता है. प्रेडोमिनेटली कैसे फंड में आपने की है? रिलायंस इज अ लार्ज कैप फंड. ओके, लार्ज कैप फंड. फ्रैंकलिन इज अ मिड कैप फंड. ओके, देन SBI स्मॉल कैप फंड. ओके, Again, DSP tax saving fund, ओके, and this no problem. So what we'll do, we will review this fund in next meeting. As you said, you are starting 10,000 fresh for retirement. So my thought process that we will invest 5,000 into predominantly a large cap fund, where we will invest into top 100 company. Okay, and I have suggested A fund and B fund 2,500 of AMC, okay, and BMC, okay. Another 5,000 will invest into multi-cap fund, because our fund manager has a freedom to move as per the market requirement or their expertise from one cap to another cap. So we should not ideally stick to into core portfolio into one particular sectoral fund, or the example small cap or mid cap fund only. So that another 2,500 will go to a C, and another 2,500 into go to the D. So that's how we will be going into 4 fund and 4 different AMC. So we have diversified even for the our retirement plan. So we will be able to review these 4 fund performance on a not necessarily yearly basis, but we will review on a once in a 3 year. हमें ऐसा कुछ लगेगा कि फंड में कुछ
कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम आया है तो वी कैन मूव टू द अनदर फंड, अदरवाइज विल कीप कंटिन्यू इन्वेस्टिंग टिल नेक्स्ट 26 years. 26 years. परफेक्ट. सो एनी क्वेश्चन राइट नाउ? No, sir. सो थैंक यू वेरी मच. तो Thank you ये very much. आप सारी फॉर्मेलिटीज जो है हम नेक्स्ट मीटिंग में कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू. आपको देखना है कि सेव होना चाहिए वीडियो.